Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss gaseous exchange in plants. So let's move to the classboard. So dear students, chapter number 13, gaseous exchange. In the introductory lecture we have discussed that and we have proved that the air is better medium than water. और उसके पीछे हमने रीजंस भी डिस्कस की थी. ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम पॉइंट था जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि वाई एयर इज़ बेटर मीडियम दैन वाटर. तो उनके आपने तीनों पॉइंट्स को वो शामिल करना है, ठीक है, उसकी ऑक्सीजन कंटेंट को, उसके अलावा उसके डेंसिटी को, और नंबर 3 द विस्कोसिटी बिटवीन, और उसको कंपैरिजन में जैसे हमने किया था वैसे ही आप उसको तीनों पॉइंट्स बनाकर और शामिल करेंगे. नाउ एज पर द क्राइटेरिया, जैसा कि हम हर चैप्टर में जितने भी सिस्टम्स को हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले प्लांट्स को, फिर उसके बाद एनिमल्स को. सो स्टार्टिंग फ्रॉम now the plants, so gaseous exchange in plants. So dear students, as far as the gaseous exchange in plants is concerned, तो उसमें हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे, जैसे जहाँ से पॉसिबल है प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज होना. लेकिन उससे पहले चंद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि जिस तरह से एनिमल्स को जो है वो एनर्जी हासिल करने के लिए रेस्पायर करना पड़ता है, उनको गैशियस एक्सचेंज करनी पड़ती है, इसी तरह से प्लांट्स को भी एनर्जी हासिल करने के लिए दे हैव टू डू द रेस्पायरेशन. सो लाइक प्लांट्स, so like animals, plants also require energy and they get their energy by respiration. So जिस तरह एनिमल्स रेस्पायरेशन के ज़रिए एनर्जी हासिल करते हैं, इसी तरह से प्लांट्स भी रेस्पायरेशन के ज़रिए ही एनर्जी हासिल करते हैं. So they also need to respire or exchange the gases between the environment, clear, and the plant. But there is a difference. There is a major difference. So unlike plants, so unlike animals, plants lack proper organs and organ systems for gaseous exchange as they are present in the in higher animals. जैसे कि हायर एनिमल्स के अंदर प्रॉपर ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है मौजूद रेस्पायरेशन के लिए, गैशियस एक्सचेंज के लिए. प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है. तो फिर एनर्जी तो इन्होंने भी हासिल करनी है. सो हाउ डू दे गेट देयर energy by respiration? So first of all, it is have to be cleared that in plants every cell exchange gases
एज पर द रिक्वायरमेंट, जिस तरह से उनको जब जब जरूरत पड़ती है तो हर सेल इंडिविजुअली वो गैसियस एक्सचेंज करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज दे लैक proper organs and organ systems for gaseous exchange. तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लैंड प्लांट्स एंड द एक्वाटिक प्लांट्स. तो उनमें देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर से इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज होगा. सो इन केस ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन लैंड प्लांट्स, so land plants में gaseous exchange किस तरह से होगा dear students? The gaseous exchange directly occurs between the cells and air. क्योंकि लैंड प्लांट्स में कौन सा मीडियम है? एयर. बाय स्टोमेटा. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, उनके अंदर जो मेजर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, जो मेजर साइट है गैसियस एक्सचेंज की, वो स्टोमेटा होते हैं. द मेजर site for gaseous exchange. क्लियर? तो ये इसको एमसीक्यू के लिए मार्क कर लें कि प्लांट्स के अंदर मेजर साइट कौन सी, वो कौन सी जगह है मेजर साइट जहां से गैसियस एक्सचेंज होगा, दैट इज स्टोमेटा. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगा हूँ. पहले प्लांट्स में देखेंगे कि जो लैंड प्लांट्स हैं उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, फिर उसमें लीफ का स्ट्रक्चर, फिर कि लीफ में कहाँ कहाँ पर किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होने वाला है. So let's suppose this is a plant, a land plant. तो उसमें कौन कौन सी मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पर होगी gaseous exchange? So number one is the leaf, and this is the young stem. Then there is a mature stem. And then there are the roots. तो ये तीन मेजर स्ट्रक्चर्स यहाँ से जो है वो गैसियस एक्सचेंज होगा. The leaf and the young stem. Then this is the cork tissue, which contains the lenticels. And then the roots. Clear? So these are the major sites, the sites from where the gaseous exchange occurs in the land plants. So first of all, if we talk about in young stem and leaves, the first point is over here कि प्लांट्स में यंग स्टेम और लीव्स में कैसे गैसियस एक्सचेंज होगा और कहाँ से होगा. इट अकर्स
through stomata. Clear? और dear students, stomata क्या है? Which are the pores or apertures, which are pores or apertures present between the guard cells. सो गार्ड सेल्स के दरमियान एक अपर्चर होता है, एक होल होता है, एक सुराख होता है, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा के जरिए में जो है ये कहाँ पर मौजूद है स्ट्रक्चर? इन यंग स्टेम एंड लीव्स। और यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करते हैं, सो इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें। इट इज एस्टिमेटेड that there are 12,000 stomata per centimeter square of leaves of tobacco plant. टोबैको जो लीफ है, तंबाकू का जो प्लांट है, उसके ऊपर उनके लीव्स के ऊपर देखा गया है कि तकरीबन 12,000 स्टोमेटा होते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर, ऑन जस्ट अ सिंगल सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ही। सो लेट्स सपोज दिस इज अ लीफ, सो 1 1 1 एंड 1, सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस स्ट्रक्चर को हम ज़रा डिटेल से देखें इन अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, सो हाउ वुड इट लुक लाइक? So this is cuticle. Layer of wax, इसके हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में भी। And this is the upper epidermis,
and this one is the mesophyll layer. इसमें ये elongated भी हैं और थोड़े से irregular shape cells, ये दोनों तरह के cells हैं, ये इसके अंदर मौजूद हैं mesophyll layer में. और ये सबसे नीचे मौजूद है the lower epidermis. Clear? और यहाँ पर मौजूद हैं these are the guard cells. और इनके दरम्यान ये जो aperture है, this aperture, or opening, this is called as stoma. Stoma is for singular, और बहुत सारे होते हैं तो इसलिए इनको उसकी जो plural form है that is stomata. Clear? So that is basically a structure, a transverse section of a leaf. Clear? और यहाँ पर ये mesophyll cells के ऊपर ये आपको इनसे ब्लू कलर की एक कोटिंग नजर आ रही है. दिस इज बेसिकली वाटर. दे आर मॉइस्ट, दे आर मॉइस्टन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि ट्रांसपायरेशन के जरिए जो वाटर रूट से होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है और इनको इस तरह से जो है वो मॉइस्ट कर देता है इनके ऊपर. क्लियर? और यहाँ पर सबसे अहम चीज़ जो आपने नोट करनी है, सो दिस वन इज द एयर स्पेसिस. These are the air spaces. तो देख सकते हैं कि एक लीफ के अंदर एयर स्पेस कितनी ज़्यादा है. ये कंपैरेटिव है हनीकॉम्ब से. जिस तरह कि आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में कि हनीकॉम्ब में उनमें सेल्स को किस तरह से डिफाइन किया था रॉबर्ट हुक ने कि these are एयर स्पेसिस which are bounded by thick walls. तो दरमियान में शुरू में जो कॉन्सेप्ट था तो उसी तरह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं. और ये एयर स्पेस किसके लिए? फॉर गैशियस एक्सचेंज, ताकि प्लांट्स के में गैशियस एक्सचेंज हो सके. क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो सी एयर स्पेसेस हैं यहाँ पर, अब ये स्टोमेटा का क्या मौजूद है? द एयर स्पेसेस. क्लियर? द स्टोमेटा लीड्स टू cellular spaces. intercellular का मतलब सेल्स के दरमियान, means between the cells. intercellular का मतलब between the cell, called, उनको हम कहते हैं air spaces, which may comprise up to, ये कितनी हो सकती हैं एक लीफ के अंदर? 40% तक. comprise up to 40% of the total volume of a leaf. Of total volume of a leaf. एक पत्ते का जितना वॉल्यूम है उसका तकरीबन 40% तक जो है सिर्फ एयर स्पेस हो सकती है. और इसका मकसद क्या है? गैशियस एक्सचेंज. सो द moistened or wet mesophyll cells enable direct gaseous exchange. क्लियर? तो प्लांट्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जहां से गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन मेजर गैशियस एक्सचेंज कहां पर हो रही है? इन द यंग स्टेम एंड द लीव्स. और लीव्स में कहां से हो रही है? यहाँ से जो मेजर स्ट्रक्चर है दैट इज स्टोमेटा, ये मेजर साइट है. यहाँ से अंदर क्या मौजूद है? इंटरसेलुलर स्पेसेस, जिनको हमने कहा एयर स्पेसेस. और यहाँ पर ये मेसोफिल सेल्स और उनके ऊपर वाटर कोटिंग मौजूद है. आसानी से आगे चलकर हम रेस्पिरेटरी सर्फेसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उनको मॉइस्ट होना उसके लिए एक कंडीशन है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्ट होती है ताकि आसानी से जो है वो गैसेस यहाँ से एक्सचेंज हो सके. ठीक है? और यहाँ से इस तरह से फौरी तौर पर जो एयर
यहाँ से अंदर आई और ये इनके साथ एक्सचेंज हो जाएगी। क्लियर? और ये स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई इन यंग स्टेम एंड लीव्स। अब हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आए, द कॉर्क टिश्यू, ओल्डर स्टेम की। इन नाउ इन ओल्डर स्टेम्स, ओल्डर स्टेम भी कह सकते हैं, उसको मैच्योर स्टेम भी कह सकते हैं, ठीक है। इन मैच्योर स्टेम देयर इज प्रेजेंट कॉर्क टिश्यू। कौन सा टिश्यू है स्टूडेंट्स? कॉर्क टिश्यू। आपने पढ़ा हुआ है कि जो लेटरल साइड्स होती हैं प्लांट की, वहां पर कौन सा टिश्यू होता है? सो देयर इज, यहां पर टिप्स के ऊपर एपिकल मेरिस्टेम और जो लेटरल साइड्स पे लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम आगे दो तरह की होती है, कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम अंदर वाले साइड पे है, कॉर्क कैम्बियम बाहर वाले साइड पे होती है। तो जो ये कॉर्क टिश्यू जो होता है, इट कंटेन्स which contains special pores, इनके अंदर स्पेशल पोर्स होते हैं, which are called, जी स्टूडेंट्स, इनको क्या कहते हैं? मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ है, they are called lenticels, they are called lenticels। क्लियर? तो ये lenticels हैं। बाकी तो इसकी बार्क बिल्कुल इम्परवियस होती है, लेकिन जगह जगह के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उभरी हुई सरफेस होती है थोड़ी सी, उसको हम कहते हैं द लेंटिसेल्स। डियर स्टूडेंट्स, गैसियस एक्सचेंज के हवाले से एक और पॉइंट भी आपने जहन में रखना है कि जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है यहाँ पर, जो प्लांट्स के अंदर, द कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा डियर स्टूडेंट्स? दैट इज xylem and phloem, xylem and phloem is not involved in gaseous exchange डायरेक्टली। ठीक है, ये उसके साथ जैसे हमारा जो कंडक्टिंग जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लाइक आवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वो हमारी गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, उसमें ब्लड जो है वो कैरी कर रहा है, हार्ट उसको पंप कर रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर वो सारा सिस्टम चल रहा है। चैप्टर नंबर 14 में डिटेल से पढ़ेंगे इसके बाद। लेकिन यहाँ पर अनलाइक इन द एनिमल्स, इनके अंदर वो वाला सिस्टम मौजूद नहीं है। एनिमल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जाइलम जो कि वाटर को सिर्फ कंडक्ट करवाता है और मिनरल्स या सॉल्ट्स को, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड की कंडक्शन या उसके ट्रांसलोकेशन के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो ये गैसियस एक्सचेंज के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं है। क्लियर? तो ओल्डर स्टेम के अंदर क्या चीज़ है? कॉर्क टिश्यू। कॉर्क टिश्यू ये बेसिकली डेड एक किस्म का टिश्यू होता है और इसके अंदर वो छोटे छोटे सुराख होते हैं, स्पेशलाइज्ड पोर्स, उनको लेंटिसेल्स कहते हैं। तो वहाँ से हो सकती है। अब बात रहा कि बाकी रूट्स की। सो इन रूट्स, इन केस ऑफ रूट्स, द गैसियस एक्सचेंज, चूंकि आमतौर पर रूट्स जो होती हैं वो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड पार्ट है, सो वहाँ पर जो सॉइल के अंदर जो एयर स्पेसिस होती हैं वहाँ से डिफ्यूज़ करके गैस जो आएगी रूट्स में, और यहाँ से डिफ्यूजन के ज़रिए वो मूव करेगी इनटू द रूट सेल्स। क्लियर? द गैसियस एक्सचेंज takes place by the air present in the soil। तो सॉइल के अंदर एयर भी मौजूद होती है, सो वहाँ से भी ये इस तरह से डिफ्यूज़ कर कर अंदर मूव कर जाएंगे। क्लियर? और यहाँ पर भी ये इसी तरह से, जैसे कि ओल्डर स्टेम के अंदर ये लेंटिसेल्स होते हैं, इसी तरह से इनके अंदर भी स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में एयर मौजूद है, वो डिफ्यूज़ करके रूट्स में जाएगी। क्लियर? क्योंकि हमने बात की कि इनमें हर सेल को इंडिविजुअली जो है वो गैसियस एक्सचेंज करना पड़ रही है। और इन द फाइनली in the aquatic plants,
इफ यू टॉक अबाउट द एक्वाटिक प्लांट्स, तो डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर उसमें भी इसी तरह से ही हैं, लेकिन फर्क क्या है मीडियम का. सो द गैसियस एक्सचेंज प्लेयर, द गैसियस exchange in aquatic plants takes by the oxygen dissolved in water. तो वो इस तरह से रेस्पायर करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट इसी तरह से ही हैं, लेकिन फ़र्क किसका आएगा, वो उसके मीडियम का. तो कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर जो ऑक्सीजन हो, वो डिसॉल्व होगी किसके अंदर, वाटर में, और तब वहाँ से इनके जो गैसियस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल होगा. सो दिस इज़ हाउ द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि प्लांट्स को भी रेस्पायरेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी ज़िंदा रहना है. सो unfortunately, there are no organs or organ systems like the higher animals in plants. So, इस वजह से every cell has to make the gaseous exchange individually. तो hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे फोटो रेस्पायरेशन इन प्लांट्स. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.